ओके स्टूडेंट्स, एज यू नो हमने जो पहला टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया था, दैट वाज लाइफ स्पैन. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज asexual reproduction. Before that, I would let you know what is reproduction, and in this video we will be covering our three topics, that is what is reproduction, what are the kinds of reproduction, and what are the modes of asexual reproduction. So we shall proceed. Okay, what is reproduction? बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है तो हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं जो कि उनके सेम काइंड होते हैं. ठीक है, और अगर हम बायोलॉजिकली इसकी बात करें और मैं इसको यहाँ पर पेंट आउट करूँ तो हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि reproduction is a biological process in which parents give rise to their offsprings of same kind. Okay, so this is a biological definition, or in technical terms or in the terms of biology we can say that what is reproduction. Okay, so reproduction is a biological process in which parents give rise to their offsprings of their same kind. ये तो बात हो गई हमारी रिप्रोडक्शन की. अब बात आती है कि काइंड्स क्या क्या है रिप्रोडक्शन की. बेसिकली देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, asexual reproduction and sexual reproduction. So in brief, I will let you know that what is the basic difference between asexual reproduction and sexual reproduction. So you can note down also. Okay, reproduction, two modes. This is asexual reproduction and this is sexual reproduction. Okay, so what is the basic difference between asexual reproduction and sexual reproduction? So there are some very salient features through which you can differentiate between them. So the first point which you can note down is, first of all, what is asexual reproduction? Asexual reproduction वो reproduction होता है जिसमें single parent involved होता है, और we can say that it is a type of reproduction involving a single parent, that is known as asexual reproduction. So in short we can say that first point we can write down, it is uniparental. It is uniparental. And here a type of reproduction in which two parents are involved is known as sexual reproduction. So therefore we can say that it is biparental. It is biparental. Okay, when this will be uniparental, then no fusion of gametes, no formation and fusion of gametes will take place.
So you can note it down also. No formation and fusion of gametes. Here, because it is biparental, so formation will take place and the fusion of gametes will also be there. Formation and fusion of gametes. Okay. Here, no zygote formation. Here, zygote will be formed because the two gametes are involved in the fusion. So, no zygote formation. No zygote formation. Here, zygote formation. Now, as you can see, the 3 points which I have written will clear that what is the difference between asexual and sexual. First point is that it is uniparental, means single parent is involved. Here, biparental means two parents are involved for the mode of reproduction. Here, no formation and fusion of gametes. Here, asexual reproduction, formation and fusion of gametes will take place. Here, no zygote formation will be there, but here, in the sexual reproduction, zygote formation will be there. And at last, in asexual reproduction, exact carbon copy of parents will be produced. So, the fourth point which you can note down is exact carbon copy of parents in asexual reproduction. Exact carbon copy of parents. Here, yes, now one thing I would like to tell you that it is important also, exact carbon copy of parents is there. So when the offspring are exact carbon copy of their parents, then it is known as cloning, means the offspring will be known as clone. So in bracket you can note down that clones will be formed. Clones. Okay. So here in sexual reproduction you can write down no clones, offsprings show variations. No clones, offsprings shows variations. Okay? Okay. So as you can see that there are 4 major points through which you can differentiate between the asexual reproduction and sexual reproduction. First of all, asexual reproduction was uniparental, sexual reproduction was biparental. Here no formation and fusion of gametes, here the formation and fusion of gametes. Here in asexual reproduction, no zygote formation, and in sexual reproduction, zygote formation. And last one was the exact carbon copy of the parents, that is known as clones in asexual reproduction, and in sexual reproduction, no clones, offspring shows variations. Is it clear up to you? Okay. Now moving on to the next that we will study in detail, that is asexual reproduction. What is asexual reproduction and what are the modes of asexual reproduction? I hope you all have pinned down the difference between asexual reproduction and sexual reproduction.
Yes, asexual reproduction. As you know, अभी हमने डिफरेंस पढ़ा कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो हम बता सकते हैं, एक डेफिनेशन दे सकते हैं, बायोलॉजिकल डेफिनेशन दे सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। Asexual reproduction is that mode of reproduction in which only single parent is involved. So we can note it down. The type of reproduction in which single parent is involved is asexual reproduction. Asexual reproduction. Okay, so as you know that what is asexual reproduction? The type of reproduction in which single parent is involved is asexual reproduction. There are different modes of asexual reproduction. So what are those modes? Modes of asexual reproduction. Basically, there are 6 modes of reproduction. First, I will write it down and then I will let you know. First, there are 6 modes. Okay? First one is fission. Asexual reproduction by fission. That is by binary fission. Next one is budding. Okay. Third is sporulation. Third is sporulation. Fourth is fragmentation. Fifth is regeneration. And the sixth and last is vegetative propagation, which is very, very important. Vegetative propagation. So, here you can see that there are 6 modes of asexual reproduction, which we will study in detail one by one. First is fission. Fission is carried out in amoeba and paramecium and is known as binary fission. Next is budding, that is carried out in hydra and yeast cell. Sporulation is carried out in penicillium. Fragmentation is carried out in Spirogyra, Slegionella. Regeneration is carried out in the starfish, planaria and the tail of lizard. And vegetative propagation, which I told you earlier also that it is very important from your exam point of view and from competitive exams also, that vegetative propagation is carried out by several propagules, different parts of the plant, and they are further divided into 5 types.
Basically, you can say that vegetative propagation by roots, by stems and by leaves. And further they are divided. So, in the next video, in the next upcoming video, we will be discussing in detail what is fission, budding, sporulation, fragmentation, regeneration, vegetative propagation. Okay students, as you can see, we will be focusing on our next asexual mode of reproduction, that is binary fission. Mainly, in short, if I let you know that what exactly the binary fission is, so it mainly occurs in the single cell organisms which belong to the Monera, kingdom Monera and Protista, and the example is amoeba and paramecium. So let us now focus on our first example that is mostly used, that is amoeba. So as you can see the diagram which is given here of amoeba. So बाइनरी फिजन अमीबा में होता कैसे है? सबसे पहले जो पेरेंट सेल होता है अमीबा, पेरेंट सेल अमीबा जो होता है, पेरेंट अमीबा, इट्स divides its nucleus. Nucleus starts dividing and the process of nucleus dividing is known as karyokinesis. ठीक है, तो यहाँ पे जब कैरियोकाइनेसिस यानी कि इसके न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो जाएंगे, इसके बाद क्या होता है, इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू होता है और ग्रेजुअली जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू होता है तो वो प्रोसेस साइटोकाइनेसिस कहलाता है. जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो वो कैरियोकाइनेसिस कहलाता है, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो वो साइटोकाइनेसिस कहलाता है. And followed by the cytokinesis, finally the two daughter amoebas are individually produced. और वो फर्दर आगे जाके अपना रिप्रोडक्शन का मोड कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस, सो you can note it down in your notebooks as it is very important and easy also, that what exactly the binary fission is and how does it take place in asexual reproduction. Okay, moving on to the next mode of reproduction, that is budding. It also occurs in single cell organism like yeast, that is also known as Saccharomyces. Okay, first of all, as you can see from this figure, which could be clearly seen by you, that a small bud develop as an outgrowth and then a adult cell divide to repeat cell division. मतलब यहाँ से जो एक बर्ड होता है, छोटा सा बर्ड, वो निकलना शुरू होता है, उसमें एक आउटग्रोथ होती है, जैसे कि आपको ये बल्जिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है. उस अडल्ट का जो सेल होता है वो रिपीटेडली डिवीजन करता है, सेल डिवीजन उसका होता रहता है. जब उसका रिपीटेड सेल डिवीजन होता है तो उसका जो सेल होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, वो भी डिवाइड होने लगता है. उसके डिवीजन की वजह से ये जो होता है पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है. और जब ये ब्रेक हो जाता है तो ये अपना इंडिविजुअल डॉटर ईस्ट सेल बनाता है. और वो जो डिटैच नहीं होता वो अपना चेन्स के फॉर्म में रहते हैं और अनडिटैचेबल बर्ड्स जो होते हैं वो लॉन्ग ईस्ट सेल्स बनाते हैं, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है. सबसे पहले हमारा जो ईस्ट सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस और वैक्यूल पाया जाता है. इस न्यूक्लियस और वैक्यूल्स की मदद से न्यूक्लियस का डिवीजन स्टार्ट होता है, जिसमें बर्ड्स जो हैं वो फॉर्म होने लगती हैं. बर्ड्स फॉर्म होने के बाद न्यूक्लियस का बर्ड के अंदर मूवमेंट स्टार्ट होता है, जिससे वो डिटैच होता है पेरेंट बॉडी से और ईस्ट सेल बनाता है. और जो पेरेंट बॉडी से डिटैच नहीं होता वो क्लस्टर्स ऑफ चेन्स की फॉर्म में पाए जाते हैं. तो इस तरीके से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. ओके, अब हम अपना तीसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखते हैं, जिसको स्पोरियुलेशन बोलते हैं, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन. एज यू कैन सी इट इज़ फाउंड इन सम ऑफ द एल्गी एंड फंजाई, यानी कि कुछ एल्गी और फंजाई जो हैं कुछ स्पोर्स के थ्रू प्रोपोगेट करते हैं. और ये स्पोर्स जो हैं वो बेसिकली 3 फॉर्म्स में पाए जाते हैं. बट क्योंकि स्पोरेंजियोस्पोर्स जो हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता,
तो इसीलिए मैंने एक ब्रीफ आपको पॉइंट्स के फॉर्म में समझाया है। तो मेनली वी विल बी फोकसिंग ऑन 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स, दैट इज जू स्पोर्स एंड कोनिडिया। तो जू स्पोर्स क्या होते हैं? जू स्पोर्स एसेक्सुअल होते हैं और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, मतलब इसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बायफ्लैजिलेट होते हैं यानी कि इसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्लामाइडोमोनास है। और स्पोरेंजियोस्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं, उसमें कोई भी फ्लैजिला नहीं पाया जाता। उसका एग्जाम्पल राइजोपस है। कोनिडिया के केस में कोनिडियाज जो हैं वो पेनिसिलिन के अंदर पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे स्पोर्स के फॉर्म में होते हैं और इसके एग्जाम्पल पेनिसिलिन और एल्ब्यूगो है। और आई होप आप साथ साथ इसके नोट डाउन भी करते जा रहे होंगे और आगे हम जू स्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है क्लामाइडोमोनास में वो देखेंगे। ओके, एज वी हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड spore formation by zoospores. Now we will be focusing on our first example, that is Chlamydomonas कि sporulation Chlamydomonas में कैसे होता है। As it is very much visible to you by the help of this diagram कि सबसे पहले जो Chlamydomonas है उसमें आपको 2 स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे। बायफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर्स मीन्स इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इनका फ्लैजिला डिटैच होता है। द मेन पार्ट इज दिस। जब फ्लैजिला डिटैच होता है उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो वो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो सेंटर में आ जाता है। जब ये प्रोटोप्लाज्म सेंटर में आता है तो क्या होता है, ये स्टार्ट डिवाइडिंग, ये डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। उसके डिवीजन से बहुत सारे जू स्पोर्स फॉर्म होते हैं। जब उससे बहुत सारे जू स्पोर्स फॉर्म होते हैं तो एट अ टाइम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ये निकल जाते हैं बाहर, बर्स्ट आउट हो जाते हैं। तो जू स्पोर्स कम्स आउट एंड फॉर्म्स द न्यू इंडिविजुअल। नया इंडिविजुअल अपना क्लामाइडोमोनास बनाते हैं। और जब नया इंडिविजुअल क्लामाइडोमोनास बनता है तो उसमें हमें एक ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होता है पेरेंट बॉडी से, जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं। उसमें पोस्टीरियर पार्ट जहाँ पर कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है वो पोस्टीरियर पार्ट कहलाता है। और जो आपका एंटीना लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिसको कि हम फ्लैजिला बोलते हैं, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, वो स्ट्रक्चर इसका इंटीरियर पार्ट कहलाता है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है जू स्पोर्स का क्लामाइडोमोनास के अंदर, जो कि एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जो कि थर्ड है स्पोर्युलेशन, जो कि हम इस टाइम समझ रहे हैं। सो यू कैन नोट इट डाउन। Okay, as we have discussed earlier about conidia. So what are conidia? Conidia are spore formed in penicillin and albugo. Conidia ऐसे spores होते हैं जो penicillin और albugo के अंदर बनते हैं। As you all familiar with penicillin that it was the first antibiotic, and about albugo it is a parasite. So as you can see the diagram which is here of conidia that is found in penicillin, तो इसका जो मिड पार्ट होता है वो इलोंगेटेड हो जाता है। जो आपको मैंने एनसर्कल करके ब्लू पेन से दिखाया है वो इलोंगेटेड होता है स्ट्रक्चर, और उसका एंड पार्ट जो होता है वो स्वेलन होता है। जहाँ पर आपको ये कोनिडियोफोर दिख रहा है वो स्वेलन हो जाता है। वो पार्ट जब स्वेलन होता है तो वो एक स्पेस छोड़ता चला जाता है। जब वो स्पेस छोड़ता है तो जहाँ जहाँ स्पेसेस ये लीव कर देता है, इट लीव्स द स्पेसेस, वो जो पार्ट होता है वो स्ट्रिग्मेटा कहलाता है। जो पॉइंटेड आपको स्ट्रक्चर्स, टाइनी पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और जहाँ जहाँ ये स्पेस छोड़ता है वहाँ वहाँ ये 6 to 8 कोनिडियाज फॉर्म करता है, जो कि एक बेसिपिटल फॉर्म में होते हैं, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस टू द एपेक्स। इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। और ये कोनिडियाज जो होते हैं वो एक बहुत ही लूज फाइबर से अटैच रहते हैं। और फिर क्या होता है, जब कंडीशंस जो होती हैं फेवरेबल होती हैं और एटमॉस्फेयर में ये इजीली डिटैच हो जाते हैं एक दूसरे से और फ्रीली मूव करते हैं एयर के अंदर। और ये कोनिडियाज जो होते हैं जब डिटैच हो जाते हैं उसके बाद ये लीव्स के स्टोमेटा पे जाते हैं और वहाँ जाके स्प्रेड होते हैं और नया पेनिसिलिन फॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से ये डायग्राम आपको विजिबल है, समझ में भी आ रहा है। सबसे पहले एक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर था, उससे क्या हुआ कि स्ट्रिग्मेटास बने, स्वेलन पार्ट बना यानी कि कोनिडियोफोर्स बने, और उससे हमारा ये लीव्स के अंदर पहुंच गया।